Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve CAT 2021 second slot, the afternoon slots first RC passage. All the RC passages as well as summary questions of slot 3 CAT 21 have been uploaded. All questions which came in CAT 22 also have been uploaded. I've also made dedicated playlist of those. Please go to those playlists if you would like to go through previous year questions, solve the passages, and then let me know your performance. Tab tak, let's go try to solve this particular previous year question. Coming to the genre of the passage, or let's say before that, I would like to ask you, if you have not solved this, please pause the video here, read the passage, then solve the questions using the timestamps, which I'm going to put in the description box, as well as in the comment section. The comment will be pinned at the top. Please go to those respective questions, solve, jot down the answers, and then you can come back to this point of the video to go through the explanation as well as the question explanations also. Okay, chalo. So I hope that you have solved it now and going forward with the explanation. The genre of this RC passage is very broadly, we can classify it as one of the social sciences based one, because in this passage we are discussing how two elements of human life function with each other. तो शुरुआत करते हैं नैरेटिव की. What does the author say in the first paragraph is that there are some people who believe in satyameva jayate. Okay, truth alone triumphs. तो ऑथर कहता है कि कुछ लोगों का ये मानना तो है, बट रियल लाइफ इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. नो, पावर, winning, okay, and possessing truth, declaring the truth, being truthful, these two things have a very, very complicated relationship with each other. Why so? Author demarcates the situation into two parts. He says that there is going to be one case. Now we are going to discuss the part which is discussed in the second para, that there are two kinds of power. In version 1, truth and power, they are best friends, sort of. They can function together. For example, let's say you want to achieve scientific miracles, you want to construct a bridge, you want to build atom bombs, blah, blah, blah. So, ऐसे time पे, the kind of power that you will have to possess is closely tied to truth. You cannot have a situation where you believe false scientific theories or false concepts and end up being in power still. No, you will fail. People will come and beat you up and nobody will give you any kind of half. Okay. So in this kind of power, in the first version, truth and power are together. You are truthful, it will give you power. Good. बहुत बढ़िया. But now comes in the thoda sa tricky part. Author says in the second part, the narrative is different. What is happening here? Truth and power have a sort of antithetical relation. If you want to stay in power, na, you cannot be allied with the truth always. कहीं कहीं पर आपको झूठ, rather in this passage, instead of saying झूठ, instead of saying lies, author has used a very respectable word by the use of fiction. There is going to be fiction, there are going to be some untrue things which you need to believe in, which you need to indulge in, which you need to tell others in order for you to have some kind of power in your own hands. ठीक है, और यही बात फर्स्ट पैसेज सेकंड पैराग्राफ में की है ऑथर ने यहाँ पर. लेट्स हाईलाइट दोस पार्ट. ऑन द वन हैंड, ओके, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज देयर ऑन वन हैंड? इमेजिन राइट हैंड में आपके क्या है? राइट हैंड में यू हैव पावर एंड ट्रूथ क्लोजली अलाइड टू ईच अदर. बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उन दोनों के बीच में यहाँ पर. ठीक है, ऑलराइट. देन इन द सेकंड हाफ, ऑन द अदर हैंड, ऑथर सेज व्हाट डू वी हैव हियर, कि दूसरी काइंड ऑफ पावर क्या है? ऑन द अदर हैंड, we have power in the form of stories, but the stories are not true. ठीक है? We are going to require people, we are going to require coordination, but लोगों के बीच में ऐसा coordination आप सच बोलकर नहीं ला सकते, आपको झूठ बोलकर ही करना होगा. And here the author is making a very sweeping broad comment कि इंसान कितना यूनिक एनिमल है, in the sense कि compared to all other living beings on the planet, we know far more truths regarding our environment, our world, the planet, blah, blah, blah. But at the same time, we also believe in a lot of bullshit, things which are completely false. And the author has taken literally a lot of things in false wala category. Stories about God, about race, मतलब आप कौन सी प्रजाति से आते हो, कौन से community से आते हो, and even also about economics. Author is calling all these things as completely fictional. तो इस पर से एक इन्फरेंस आप निकाल सकते हो दैट
Author seems to be somebody बहुत ज्यादा logical thought process वाला है, might be even an atheist, somebody who does not believe in God. Okay, he even does not end up believing a lot of stuff which we call as economics. Okay, काफी सरप्राइजिंग, बट एनीवे लेट्स गो अहेड. ज्यादा कुछ बोला नहीं है थर्ड एंड फोर्थ पैरा के अंदर में. व्हाट इज ऑथर सेइंग? देयर आर मल्टीपल वेज इन विच फिक्शन, इन विच झूठ विंस ओवर ट्रुथ, gives you actual tangible advantages compared to truth. And which are those? Let's highlight them. Okay, author has mentioned those in multiple 1 2 3 4 parts. Let's go and highlight them. कि पहला क्या है? First advantage where you will have advantage of fiction, benefit using fiction over truth is कि fiction is local. आपको अगर आपकी कम्युनिटी को बिलीव करवाना है बॉस नहीं, हम लोग ना सुपीरियर है, बाहर की दुनिया जाए फाड़ में, हम बाकियों से सुपीरियर, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू गेन पावर इन योर लोकल सर्कल. You cannot go out in the world, you cannot go out on a global stage and say, dude, I am superior, you are inferior. No, people will beat you up. So in a limited circle, fiction is far more powerful compared to truth on global scale. ठीक है. सेकेंड एडवांटेज वाली जो लाइन है ये अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं होती. Here the author is using some technical terms like reliable signal, signaling, being costly, not being costly, वगैरह वगैरह. The problem here is that, as you can notice, there are a lot of disjointed statements here. Maybe the original source was discussing all these points in a lot of detail, but the person who made this RC passage, who put these questions together, he decided to cut out those extra sentences from the original source. तो उसके वजह से दिक्कत क्या हो गई है कि we do not have an in-depth understanding of what these 3-4 advantages of fiction. हमें बस फटफट एक इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट में author has explained these things to us. That's it. So unfortunately, I also cannot help you very reliably and in a lot of depth regarding what signaling is. I know what the concept is. If you would like to know, I would recommend that you go ahead and Google what is meant by signaling in society, what is meant by signaling in philosophy. आपको मिल जाएगा उसका explanation. But the reason I'm not giving you this is कि इस प्रकार के background knowledge के बिना भी, without possessing such background knowledge, you should be able to handle RC passages, because there's a ton of jargon out there जो आप नहीं जानते. You don't even know the tip of the iceberg when it comes to concepts, when it comes to fields like social sciences, humanities, arts, culture, languages, music, right? As far as you might be, let's say if you're an engineer, you might know a little bit of math and science and technology का world. Okay, even engineers don't know a lot about technology का world. A Mac guy doesn't know comp IT stuff, a comp IT guy doesn't know Mac का stuff. तो फिर इतने रिमोट, इतने अलग फील्ड्स लाइक सोशल साइंसेस, उसका आप क्या क्या ही नॉलेज गेन कर लो, राइट? सो आई वुड प्रेफर हियर नॉट टू फीड यू थिंग्स in a spoon feeding format. So let's say we don't know the meaning of this second advantage. तो हाउ डू वी यूज दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? बस दिमाग में एक जगह बिठा लो कि ठीक है, सिग्नलिंग रिलेटेड कुछ तो एक एडवांटेज ऑथर ने बोला है, वेयर फिक्शन इज बेटर, मोर पावरफुल दैन ट्रूथ. दैट्स इट. उससे ज्यादा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे. ठीक है. एंड देन ऑथर सेज कि अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर में, एंड ही कॉल्स दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ fiction, of lies over truth. And this is where the paragraph once again becomes pretty relatable. Abstract concept नहीं है signaling जैसा. क्या है advantage third जो author कहता है? It is that the truth is sometimes so harsh, so difficult to digest कि आप इसको openly society में नहीं बोल सकते. People will start hating you for saying those things. So what happens is you have politicians who know these truths, but they will not tell you that. Okay, they will peddle lies, they will propagate fiction in order to retain power. Okay, और यहाँ पर ऑथर ने थोड़ा सा ड्रामेटिक टच भी दिया है. ही इज सेइंग, हमारी कोर्ट की लैंग्वेज होती है ना, मैं सिर्फ सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, पूरा पूरा सच कहूंगा, समथिंग लाइक दैट. यू मस्ट हैव सीन इन हिंदी मूवीज. तो सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर कि if let us say there is a guy who wants to be a president, who is running for the election, if he is a guy who tells the American public the truth, the whole truth and nothing but the truth, the kind of language which we use while taking an oath in court, the author says ये बंदा 100% हारेगा. By no manner, by no means can he win the elections. So what is the inference we can draw from it? कि
almost क्या, every successful leader has to stray away from the truth, has to deviate from the truth in some way or the other. अब कितना आप भटक रहे हो सच से, अब ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन. देयर माइट बी समबडी आउट देयर हु सेज 90% ट्रू थिंग्स, 10% मे बी फिक्शन. देयर माइट बी टोटल रैंडम पीपल हु आर 50-50, आधी बात सच बोल रहे हैं, आधा झूठी चल रहा है, सब कुछ मे बी. एंड रिगार्डिंग ऑल दिस, ऑथर हैज मेड यू नो मेड अ वेरी अगेन ब्रॉड स्वीपिंग कमेंट्री कि सच्चाई को लेकर आपको चलना है ना जिंदगी में, ये एक बहुत एडमायरेबल बात है. चलो मान लिया, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बट दुनियादारी में इसका कोई काम नहीं. एज फार एज इट्स पॉलिटिक्स, एज फार इट्स अ गेम ऑफ ग्रैबिंग पावर, डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी ट्रूथफुल द एंटायर टाइम. इफ यू डू दैट, यू आर सो नईव, ओके, एंड यू हैव 100% guarantee of losing the election if you are allied with the truth all the time. ठीक है. And then comes a really good part of the paragraph. This is where I actually loved this passage, the last paragraph of the entire RC. क्या बोला है कि continuing the discussion of the previous paragraph, that the public cannot handle the truth, the plain truth, a lot of times. Either you have to change it, either you have to indulge in fiction, or you even have to distort the truth a lot of times. And scholars, people who study the society, people who give out opinions, people who are philosophers, ये सब लोगों को ये बातें हजारों साल से पता है. Scholars have known this for thousands of years. What exactly? कि a lot of times it is better to give lower priority to truth and give higher priority to fiction. क्योंकि as explained in the second paragraph, जब आप फिक्शन में इंडल्ज करते हो ना, आप झूठी कहानियां जब बेचते हो समाज में, तो इट हैज दिस अनइंटेंडेड बेनिफिट ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. लार्ज स्केल ऑपरेशन, I'll once again highlight it for you guys. Second paragraph we are visiting right now. Large scale cooperation depends on believing common stories. And what is so unique about these stories, that they are not necessarily truthful. मतलब झूठ के दम पे समाज बनते हैं. And in the last paragraph, author has once again come to this narrative that a lot of times you face the dilemma, जहां पे अगर आपने सच बता दिया तो that the society will implode, people will go boom, society will go boom. तो ऐसे टाइम पे बॉस, सत्य को साइड में रखो, इंसान की जिंदगी, समाज का एग्जिस्टेंस ज्यादा मैटर करता है. सो एडवांटेज ऑफ इंक्रीज सोशल कोहेशन, इंक्रीज सोशल यूनिटी कभी कभार इतनी बड़ी होती है that you have to align yourself with fictional stories and you have to ignore the truth. That is the reality of human society. और सदियों से, हजारों साल से स्कॉलर लोगों को ये बात पता है. And a lot of times these guys run into a social dilemma, which is कि हमने समाज को यूनाइट करके रखना चाहिए, कुछ झूठी कहानियां बताकर लोगों को एकजुट रख के, और शुड वी टेल पीपल द ट्रूथ एंड देन फेस अ रिस्क कि गई भाई सोसाइटी, फट गया सब कुछ. ओके, तो दिस इज द एथिकल डायलेमा दैट दे फेस अ लॉट ऑफ टाइम. एंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स दे नो कि मेनी अ टाइम्स दिस जंक्चर विल अराइव वेयर आपको झूठ बेचना है समाज, ताकि समाज जुड़ा हुआ है. तो रिगार्डिंग दिस, इफ यू फाउंड दिस लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा वेग, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, वेर यू माइट बी लाइक ये कैसी बातचीत है यार, झूठ बोलकर कौन सा समाज टिकता है, तो लेट मी गिव यू अनदर पॉप कल्चर रेफरेंस. आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ दीज डेज बट फाइंड रिलेटेबल मूवी रेफरेंसेस. सो द पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज, लेट मी क्लियर द स्क्रीन एक्चुअली. The movie The Dark Knight by Christopher Nolan, it released in way back in 2008, and it's about Batman trilogy by Christopher Nolan. If you haven't watched it, The Dark Knight trilogy, please देखो, बहुत अच्छी movie series है about Batman. You might not be into superheroes, but this movie is not a typical superhero. Anyway, coming to the narrative, if you are not aware of what the story of this movie is, थोड़ा सा spoiler मुझे देना ही होगा in a way to explain this. So these are the four characters as you can see on the screen in the form that I have positioned them. Writing all those images will create a bit of mess, so इसको अभी के लिए साइड में लिखता हूं मैं. And then you have the villain, the Joker. ठीक है. So the story of the movie एकदम short में मैं आपको बताता हूँ. What happens is कि this guy, the Joker, he is the villain in the movie.
And these three guys, Batman, Commissioner Gordon, of course, police wala, and Harvey Dent, these guys are sort of allies. Allies in the sense that they are on the good ka side, Joker is on the evil side, or Joker is playing mind games with society in order to, bomb everything up. He is determined to tear apart Gotham City, the place where Batman is from. So what he starts doing is he starts playing mind game in the society, and one thing lead to another, blah blah blah. Story जैसे जैसे progress होती है, finally he hits jackpot on Joker, who manages to poison, who manages to brainwash Harvey Dent completely, and manages to turn Harvey Dent into a villain. So Harvey Dent was originally the hero, the guy who is expected to do the best things out there, good guy of the movie. But what happens is that the villain changes the good guy into a villain. So that is the power of Joker. That is the power of his cunningness. Okay, this is how. What happens is, unfortunately, Harvey Dent goes bullshit crazy and starts murdering people. He ends up even shooting Batman, although he does not die, but he shoots him with a gun, and he also commits a lot of murders. And at the end of the movie, very sadly, he himself dies. तो उसके बाद में क्या होता है? There is a dilemma in front of Batman and Commissioner Gordon. What is the dilemma before them? कि बॉस अभी ये बात समाज में बताए कैसे? हाउ डू वी गो आउट इन द सोसाइटी एंड टेल कॉमन पीपल कि भैया जो आपका ओरिजिनली हीरो था हार्वी डेंट, वो रातों रात विलेन बन गया और उसने इतने सारे मर्डर्स कमिट कर दिए. सोसाइटी तो पूरी बिखर जाएगी. पीपल विल स्टॉप ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट, people will stop trusting the police, everybody. Massive risk. So as at the climax of the movie, a common decision is taken between Batman and Commissioner is that कि वो सारे murders, वो सारे evil acts जो हार्वी डेंट ने commit किए थे, सारा का सारा blame who will take? Batman will take the blame. कि ठीक है, आप सोसाइटी में ये मत बताओ कि हार्वी डेंट ने ये सब किया, उसको अच्छा ही रहने दो. मेक हिम अ हीरो इन पीपल्स माइंड, sell this fiction to them, make me the villain. I can take that hit to my reputation and I will vanish. So this is the climax of the movie. And if you have understood the passage, so you will now understand why I am relating this story to you, because of this last paragraph का mention. कि कभी कभार सच बोलना बहुत रिस्की है. समाज लोग बिखर जाएंगे, यूनिटी टूट जाएगी, समाज फट जाएगा. So to retain unity, a lot of times you have to indulge, engage in fiction. That is what the last paragraph is talking about. ठीक है? So I hope that you got this movie reference. It's not too cliche, and I hope that it was not cheesy either. ठीक है? चलो. So with this, let's round up the passage. Just give me a second. Okay. Rounding off the passage. Short में बताता हूँ. Author is saying, सत्यमेव जयते, ट्रूथ अकेला पावर देगा आपको, ऐसा नहीं है. Sometimes truth and power are best buddies. Sometimes truth and power are sort of enemies of each other. And जो second case है where they are opposite each other in opposite teams, उसके ऊपर में maximum focus है पूरे passage. Author is saying there are a lot of use cases, especially politics and power, where being allied to the truth always will lead you to collapse, will also possibly lead the society to also a case of collapse. ठीक है? So in order to retain power, in order to retain the structure of society, you have to indulge in lies, you have to indulge in fiction a lot of times. Okay? So with that, let's go and try to attack the questions now. Okay. So first question, central theme of the passage. Okay. Main idea of the passage is about choice between, the job is made very easy. कि कौन सी दो चीजों के बीच में चॉइस आपको करना पड़ेगा. पैसेज क्या बताता है? वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वी डिस्कस्ड इट जस्ट अ मिनट अगो. स्कॉलर्स एज वेल एज लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, अ लॉट ऑफ टाइम हैव टू मेक दिस चॉइस कि यार हम बाहर जाकर समाज में सच बोल दे एट द रिस्क ऑफ सोसाइटी इंप्लोडिंग, और शुड वी एंगेज इन फिक्शन, शुड वी से लाइज आउट देयर इन द सोसाइटी. तो आंसर इज दोनों में से किसी के एक के बीच में चूज करना है ना. तो आंसर वेरी क्लियरली बिकम्स ऑप्शन डी. अटेनिंग सोशल कोहेजन at the cost of the truth, at the cost of saying lies to the people. And on the other hand, another choice might be
कि नहीं आप जाओ समाज में सच बोल दो सबको, बाद में जो होगा आप देखेंगे, मरे लोग तो मरे, फटी सोसाइटी तो फट जाए। ठीक है, ऑप्शन ए इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, बिकॉज ट्रूथ एंड पावर, शुरुआत में ही पैसेज में ऑथर ने कहा है देयर आर टू केसेस रिगार्डिंग दिस। In the first case, on one hand, look at this part that I've highlighted in yellow over here. What is the author saying? He, on one hand, in one part of the story, truth and power are going to be in the same team. You don't have to choose between them. In the second half, you have to choose between them. And why is that? Because truth will lead to society including, and not going for truth means trying to maintain social unity. So option A, if you got trapped in here, तो थोड़ा सा इन डेप्थ चाहिए ऑप्शन, should have elaborated truth at the cost of unity and power at the cost of truth. अगर इस तरीके से होता तो then it would have been a good option. But right now it is not the case. We have a far superior option in the form of B available. ठीक है, option B and C are actually quite ridiculous. You should be able to throw them out at this stage. But अगर आपको नहीं जमा है फिर भी, if you have any kind of confusion, please drop it in the comment section. I'll help you out. ठीक है, चलो, I hope that you got this question correct. Very straightforward, hardly any load on your mind, hardly any burden. So let's go take a look at the second question now. ठीक है, चलो, ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा सा दिक्कत दिया। क्यों? My answer I'll put out here, honest confession, my answer does not agree with the official answer out there. मैं दोनों के भी थॉट प्रोसेस आपको बता देता हूँ, at the end it's your choice completely. तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, that you are given 4 quotes from the passage. कौन से कोट में कौन से सेंटेंस से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो that the author overemphasizes the importance of fiction. Now, in my opinion, what is the meaning of overemphasize? Emphasize करना मतलब importance बताना, highlight the importance of something, and overemphasize मतलब जरूरत से ज्यादा importance play करना किसी चीज का, कि नहीं नहीं ये चीज महान, ये ही सब कुछ, ये ही बड़ा, भाई प्लीज इसको ही आप ध्यान दो, उस तरीके से I thought of overemphasize. Okay, so what is the question? How did I interpret it? For me, I thought that the question wants me to go and search for an option जहां पर फिक्शन का हद से ज्यादा तारीफ हो गई है, जहां पर फिक्शन का हद से ज्यादा ही इंपॉर्टेंस ऑथर ने प्ले कर। अब फिक्शन का इंपॉर्टेंस प्ले किया है, इसका मीनिंग क्या कि भैया ट्रुथ की बैंड बजाई है, ट्रुथ को गालियां मारी है, ट्रुथ को डाउन प्ले किया है, तभी तो जाकर आप फिक्शन का इंपॉर्टेंस उछाल सकते हो ना। यू कैन ओवर एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्शन इन दैट केस। ठीक है, सो विद दिस थॉट प्रोसेस व्हाट डिड आई डू, आई इवैल्यूएटेड द ऑप्शन एंड दिस इज हाउ। कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, लेट्स गो टेक अ लुक एट इट। ऑप्शन ए क्या कहता है, ट्रूथ एंड पावर हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिकॉज इन ह्यूमन सोसाइटी पावर कैन मीन टू वेरी डिफरेंट। तो इस सेंटेंस में से कहीं पर भी यू कैनॉट draw an inference, you kahin par bhi you cannot take home the message that truth is being downplayed and fiction is being overplayed, overemphasized. No, rather option A is very balanced statement ki nahi, things are pretty complicated, let's not give undue importance to one of the two things. So sentence A is not doing what we want in the question. What we want is overemphasize the importance of fiction. आप fiction की तारीफ करो यार भर भर के, यहां पर तारीफ नहीं की है फिक्शन की, बस कॉम्प्लिकेशन बताया है। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन ए गोज आउट। ठीक है, ऑप्शन सी, लेट्स जंप ऑप्शन एंड टेक अ लुक, व्हाट डज इट से? ऑन वन हैंड पावर मींस हैविंग द एबिलिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्टिव रियलिटीज, हंट एनिमल्स, क्रिएट एटम बॉम्ब्स, क्रिएट ब्रिजेस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आप ध्यान से पढ़ो पैसेज तो दिस इज ऑप्शन सी, ये वाला जो केस है, इट एक्चुअली प्लेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ, it does not play the importance of fiction. यहाँ पर इन द फर्स्ट केस ऑथर ने क्लियर कट बोला है सेकंड पैरा के ओपनिंग स्टेटमेंट कि देयर आर गोइंग टू बी सिचुएशंस वेयर ट्रूथ इक्वल टू पावर, बोथ आर टुगेदर इन द सेम थिंग, बट हमें तो चाहिए फिक्शन का बोलबाला करने वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन सी ऑल्सो गेट्स किक्ड आउट, बचते हैं बी और डी। सो हाउ डिड आई इवैल्यूएट द टू ऑप्शंस? लेट्स टेक अ लुक एट डी फर्स्ट। स्कॉलर्स ऑफन हैड टू डिसाइड कि ट्रुथ के पास जाए, ट्रुथ को सपोर्ट करे, या सोशल हार्मनी। और सोशल हार्मनी कैसे मेंटेन हो रही है? तो फिक्शन के दम पे। सो इन ऑप्शन डी व्हाट डज द स्टेटमेंट से? स्कॉलर्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स दे हैड टू मेक अ चॉइस कि आर वी सर्विंग द ट्रुथ और आर वी सर्विंग
fiction? Are we engaging in true truth stories or are we engaging in fictional stories? तो कहीं ना कहीं फॉर मी ऑप्शन डी इवेल्युएटेड पोर्ट्रेट बिफोर मी अ चॉइस बिटवीन ट्रू एंड समथिंग फॉल्स. तो यहां पर भी इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्शन मेरे नजर में उठकर नहीं आया है. जस्ट लाइक ऑप्शन ए, इन ऑप्शन डी दिस इज ऑल्सो क्वाइट ओपन एक्चुअली. अब डिपेंड करेगा स्कॉलर के ऊपर. द स्कॉलर माइट समटाइम्स गो फॉर ट्रू. My bad, the scholar might sometimes go for the truth and sometimes he might go for fiction in order to maintain social unity. ठीक है. So for me option D does not overplay the importance of fiction. हमें तो ऐसा चाहिए कि भाई ट्रू ट्रूथफुल स्टोरी, हट भागो तुम यहाँ से, हम तो फिक्शन को ही प्रमोट करेंगे. तो फॉर मी दिस वाज ऑप्शन बी एक्चुअली. Please keep in mind this was mine answer, not the official answer. Ki sticking with the truth is best strategy for gaining power. There are people who believe this and author is saying अरे यार भैया ऐसा नहीं है, this is just a myth. मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन बी में ट्रुथ की तो बैंड बजाइए, ट्रुथ को डाउन प्ले किया है कि सत्य से पावर मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, शांत हो जाओ, ये मिथ है, झूठ है ये सब. तो फॉर मी ऑप्शन बी overemphasizes the importance of fiction because look at the solidly deterministic tone of option B. क्लियर कट ऑथर बोल रहा है कि हट ये तो सब मिथ है यार, ये सब झूठ बातें हैं कि सत्य से पावर मिलना है, ऐसा होता ही. तो कहीं ना कहीं आई थॉट ऑप्शन बी शुड बी द आंसर बट अनफॉर्चुनेटली आई वेंट रॉन्ग हियर. ऑफिशियली करेक्ट आंसर गिवन इज डी. तो आई विल राइट इट हियर, ऑफिशियल आंसर. अब इसका एक्सप्लेनेशन तो ऑफिशियल मिलता नहीं है. डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट ट्यूटर्स हैव कम फॉरवर्ड विद डिफरेंट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑप्शन डी. बट एज इज माय पॉलिसी, मैं अगर गलत होता हूं तो आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट दिस बिफोर यू गाइस. ठीक है. यू नीड नॉट अग्री विथ मी. माय जॉब इज सिंपली टू एल्यूसिडेट थिंकिंग प्रोसेस, माय रैशनल बिफोर यू. Of course, my opinion means almost nothing or rather next to nothing here because the exam is already done and anyway the official answer key is paramount. मेरा आंसर ऑप्शन ए बी या सी रहे कुछ मायने नहीं रखता, गलत मतलब गलत है और करेक्ट आंसर डी दिया. ठीक है. सो लेट मी नो वेदर you are able to spot, whether you can pinpoint anywhere where I might be going wrong. If yes, I am very much open to feedback. Please let me know. Would be more than glad to arrive at a good understanding why D should be the answer. ठीक है. चल कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. Let's go to question 3 now. Very straightforward. Use of double negative can help you arrive at a positive here. कोई स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करना है ऑथर ने एक्सेप्ट वन. मतलब क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज हैज टू बी, मीनिंग कि आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो ऑथर सपोर्ट ही नहीं करना है, ऑथर जिसको गाली मारेगा. एक ऑप्शन रहेगा जो ऑथर सपोर्ट कर जाए और वही आपका आंसर है. ठीक है. So the job is made very simple here. You have to find an option which is in line with author's thought process. And I cannot believe how easy this option has been made here. Last option D. Clear-cut author's opinion in the penultimate paragraph. Where I have highlighted, where I have underlined this with blue lines over here. कि कोई पॉलिटिशियन अगर 100% ट्रुथ बोलेगा तो ये पक्का गिरेगा आगे जाके, क्योंकि पीपल कैन नॉट हैंडल अनवार्निश्ड ट्रुथ. अनवार्निश्ड मतलब अनपॉलिश्ड, जिसके साथ आपने टैंपरिंग नहीं की है. नॉन टैंपर्ड ट्रुथ मतलब एक्चुअल रियलिटी. पीपल कैन नॉट हैंडल एक्चुअल जेन्युइन रियलिटी, सो लीडर्स रिटेन पावर बाय डिविएटिंग फ्रॉम इट. अब कितने भटकेंगे हम ये नहीं जानते, बट भटकना जरूरी है क्योंकि आप 100% ट्रुथ बोलोगे सोसाइटी में आपको कोई इलेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. So very much in line with what the author has mentioned. ABC can be rejected very easily. Still, if any doubts, please let me know in the comment section. More than glad to help you. Always you use this funda of double negative, make a positive. Very easy and handy way of breaking multiple negatives which can come in the question. Anyway, coming to the last one now. Author implies what? Like scholars, successful leaders do what? मतलब आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जहां पर सक्सेसफुल लीडर्स और स्कॉलर्स सेम बात जानते हो.
इनको पता है क्या करना है समाज, सत्य और झूठ को लेकर। तो ये चॉइस इज वेरी इजियर। क्लियर कट स्कॉलर्स के बारे में कहा, ज्ञान दिया है, लास्ट पैराग्राफ ओनली, कि a lot of times there are going to be a situation where you either choose the truth or you choose unity in the form of fiction by selling false stories। तो ये बात लीडर्स भी जानते हैं, क्योंकि अगर आपने पूरा सच बोला तो पावर गई हाथ से। और स्कॉलर्स भी जानते हैं कि बॉस, यूनिटी के लिए ट्रुथ को सैक्रिफाइस करना होगा। तो आंसर हैज टू बी ऑप्शन ए, दैट बोथ ऑफ देम नो हाउ टू बैलेंस ट्रुथ एंड सोशल यूनिटी। अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि हाउ डू स्कॉलर्स नो दिस, कहां से ये बात इन्फर किया कि दे ऑलरेडी नो दिस थिंग, तो वी कैन इन्फर दिस फ्रॉम दिस पार्ट। यू हैव टू टेक अ लुक एट द tense as well as some words which are present there. Scholars have known this for thousands of years, ठीक है। और यहाँ पर ये टेंस भी देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस है, they often had to decide, ठीक है, मतलब कर चुके हैं ये बात वो लोग सदियों से। तो फ्रॉम दैट यू कैन इन्फर क्लियर कट कि उनको पता है कि कब सोसाइटी की यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कब सच्चाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसके अंदर में, actually this statement is sort of true but with respect to only leaders। कि अगर आपको ऑफिस में रहना है, मतलब आपको सत्ता में रहना है, आपके हाथ में पावर चाहिए, तो आपको दोनों प्रकार की पावर लेवरेज करना होगा। कौन सी दो प्रकार की पावर? मेंशन्ड ओवर हियर इन द फर्स्ट एंड सेकंड पैरा। एक पावर जहां पे आप सच्चाई के दम पे समाज को आगे बढ़ाते हो, वेर यू बिल्ड ब्रिजेस, वेर यू कंस्ट्रक्ट एटम बॉम्ब्स बाय टेलिंग द ट्रुथ। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी काइंड ऑफ पावर वेर यू आर रिटेनिंग, I'm saying the word power a lot of times here, I'm really tired of saying this word, where you retain power by indulging in fiction, ठीक है। तो ये बात एक्चुअली लीडर्स के लिए सही है, बट देयर इज नो सच थिंग एज रिमेनिंग इन ऑफिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉरी 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 स्कॉलर्स। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, कंप्लीटली माय बैड, प्लीज पार्डन। स्कॉलर्स के केस में देयर इज नो सच थिंग एज स्टेइंग इन ऑफिस, मतलब कि ऑफिस में यानी पावर में, सत्ता में। तो सत्ता का कोई खेल ही नहीं है स्कॉलर लोगों के सामने, वो तो एकेडमिक लोग हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी स्टेटमेंट, इवन दो इट माइट बी ट्रू, अगर आपने इन्फरेंस अच्छे से निकाला है तो, बट क्वेश्चन इज एक्सप्लिसिटली आस्किंग अस लाइक स्कॉलर्स, तो दोनों में सिमिलैरिटी चाहिए। ओके, सो आई होप दैट दिस आल्सो टेक्स केयर ऑफ any kind of doubt that you might have in mind. Still, if any other option of any question you are still not clear about, please use the comment section, drop your query there. I'll try to resolve it as soon as possible. Okay, chalo, thanks a lot for your time. If you like our content, please consider liking and subscribing to the channel. Please share it with your other friends who might be preparing for different exams like CAT, GRE, GMAT, might come in really handy. Till then, tata, bye bye, and take care. See you all in the next video.